Good morning, class. In the previous class, we have discussed about the types of organizing structure, that it is categorized into two types, that is functional and the division. Also, we have done the functional structure, but in today's class, I am going to discuss about the divisional structure. As you can see, the name suggests is divisional structure, and divisional means divided. So basically divisional structure is a type of organization structure in which the enterprise is divided into separate units or the division, and within each division functional structure is adopted. मीन्स डिविजनल स्ट्रक्चर हम कब अडॉप्ट करते हैं, जब हम वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट या वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ के साथ जब डील करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं सेपरेट यूनिट्स में, और हर एक यूनिट या हर एक डिवीजन के अंदर वी परफॉर्म द फंक्शनल स्ट्रक्चर. Each division is a multifunctional as well as work as a profit center. Why multifunctional? Because multifunctional का मतलब होता है कि वो वेरियस टाइप या डिफरेंट फंक्शंस के साथ या डिफरेंट एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करती है, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग एक्सेट्रा. ओके, और वो हर एक डिवीज़न अपने अपने प्रॉफिट के लिए दे वर्क. सो दैट इज़ वाई डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, हम सेपरेट यूनिट को या सेपरेट डिवीज़न क्रिएट करते हैं, और हर एक डिवीज़न अपने एम के साथ, यानी कि उनका खुद का प्रॉफिट सेंटर मोटिव होता है. एज यू सी फ्रॉम दिस फिगर दैट there is a company who deal various types of products, for example garments, footwear, cosmetic and skincare, and under each divisional structure we adopt the functional structure. That is, under the garment we have production, marketing, purchasing, human resource, and same under the footwear also, under cosmetic also, and under the skincare also. So basically divisional structure में हम अलग अलग डिविज़न करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, और उस प्रोडक्ट के अंडर भी वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो होती है वो परफॉर्म होती है. We can also consider another example. Suppose when we visit a mall, okay, what we see in the mall that on first floor, suppose they have all the items related to the beauty products. On second floor we have all the clothes item. On third floor we have all the shoe stores, and on fourth floor we have the food court. So we have divided in a mall, we have divided the various floors according to the different section, and each section is performing their own activities. Okay, now we move to the next, that is merits or advantages of divisional structure. That is growth opportunities, define accountability, promote flexibility and initiative, product specialization and expansion and growth. Okay, we will discuss one by one each of these merits. Let's start with the first, that is product specialization. Under the product specialization, it helps in the development of varied skill in the divisional head, and this prepare him for the higher position. So basically डिविजनल स्ट्रक्चर में जब हम प्रोडक्ट की क्या होती है, स्पेशलाइजेशन होती है, इससे हमारी डेवलपमेंट होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर. हमारी स्किल्स जो होती है, ओवरऑल स्किल वो डेवलप हो जाती है और हमारे को प्रिपेयर करता है फॉर द हायर पोजीशन. नेक्स्ट इज़ ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी. In this, each product department is treated as a profit center, and each is accountable for its own profit and loss. This helps in fixation of responsibility and helps in evaluating the performance. So under this, हर एक डिपार्टमेंट का क्या होता है, अपने अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं, अपना खुद का प्रॉफिट सेंटर होता है. तो मतलब वो खुद के डिपार्टमेंट के लिए, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो खुद के डिपार्टमेंट के लिए खुद ही अकाउंटेबल है, और इसमें हम ईज़िली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं
कि किसकी वजह से सपोज़ प्रॉफिट नहीं हो रहा है ज़्यादा, या किस डिपार्टमेंट में हम अचीव कर रहे हैं अच्छे प्रॉफिट, तो हम ईज़िली परफॉर्मेंस को, हर एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को ईज़िली एवेलुएट भी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ flexibility and initiative. It promotes flexibility and initiative because each divisional function is an autonomous, which leads to faster decision making. So in divisional structure क्या प्रमोट करता है? फ्लेक्सिबिलिटीज़ प्रमोट करता है, जिससे कि हमारा ईच डिवीजन फंक्शन जो है ऑटोनॉमस को लीड करता है और हम फास्टर डिसीजन मेकिंग में भी ले सकते हैं. नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. इन डिविजनल स्ट्रक्चर न्यू डिविजन कैन ईजली एडेड विदाउट इंटरप्रेटिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन. सो under divisional structure we can easily expand, or if we want to produce another product we can easily add without disturbing the existing operation of the organization. So these all are the advantages. Now we move to the next, that is demerits or limitation of the divisional structure. There are basically three limitations, that is conflict among division, increase operation cost or it is expensive, complete authority leads to ignoring organizational interest. Basically in this we have ignore the organizational interest. Now we discuss the first, that is expensive. It may lead to increase in cost because of duplication of resources in various departments. Hence resources are misused and cost of production may increase. तो एक्सपेंसिव क्यों है? बिकॉज बहुत ज़्यादा हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, इसमें इनकर्ड हो रही है. हो सकता है हम रिसोर्स का मिसयूज़ करें, या हम डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्स भी यूज़ कर रहे हैं अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में, जिससे ओवरऑल कॉस्ट जो है हमारी इंक्रीज़ हो रही है. ओके, नेक्स्ट इज़ कॉन्फ्लिक्ट्स. There may be conflicts among different divisions with reference to allocation of funds. Also, a particular division may try to maximize his profit at the cost of other division. So basically, under the divisional structure, we can arises with the various conflict among different departments. For example, in reference with the allocation of fund. For example, suppose one department wants the higher fund, but because of it, we cannot allocate the fund in another departments. Okay, so it may leads to the conflicts, and there can be any cases or any reason for the conflicts among the department. Now next is organizational interest ignore. It provides manager with the authority to supervise all activities related to a particular division. Manager focus on their own product and pay no attention to overall organizational objective. So it under the divisional structure, basically we ignore the overall interest of the organization. Why? Because every manager will focus in its own department and they might be ignore the organizational interest. They will focus or supervise in the activity related to a particular division. So we will pay no attention to the overall organizational objective. Okay, so these are the basic demerits or disadvantages of the divisional structure. Now we move to our next topic, that is a difference between the functional structure and the divisional structure. Okay, first point is formation. Under functional structure, it is formed on the basis of the work or the function, but under the divisional structure, it is formed on the basis of the product. तो formation कैसा है functional structure में? On the basis of the work or whatever function we have do in the organization, but under the divisional, it is formed on the basis of the division of the product. Second point is specialization. Under the functional structure, it brings specialization of function or the job, but under divisional structure it brings product specialization. So
फंक्शनल स्ट्रक्चर में किसकी स्पेशलाइजेशन है, फंक्शन की या जॉब की, बट डिविजनल स्ट्रक्चर में अभी जस्ट हमने पढ़ा प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन को लेकर आता है. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट. अंडर द फंक्शनल स्ट्रक्चर we can say it is less expensive or more economical as there is no duplication of the job. बट डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर ये अभी जस्ट हमने पढ़ा कि मोर एक्सपेंसिव है इन टर्म ऑफ कॉस्ट एज देयर इज डुप्लीकेशन ऑफ जॉब्स. नेक्स्ट इज coordination. It is difficult to coordinate the activities in the organization is producing many products, but coordination is easy as whole division is headed by one divisional head who control all the divisional activity. So basically functional structure में coordination लेकर आना difficult है, but divisional structure में we can easily coordinate with various departments. Next is responsibility. In this structure, it is very difficult to fix the responsibility on a particular department, but under the divisional structure, it is easy to fix responsibility on a particular department. तो functional structure के अंदर very difficult to fix the responsibility, but under the divisional structure, we can easily put the responsibility. Next is managerial department. Under managerial department, okay, manager becomes specialized in one function only, so it is very difficult. But under divisional structure for managerial department, it has more scope, autonomy, as well as a chance to perform multiple functions that helps in managerial development. तो इसके अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर मैनेजर जो होता है स्पेशलाइज सिर्फ एक ही फंक्शन में होता है, बट डिविजनल स्ट्रक्चर में मैनेजर जो होता है डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ डील करता है, तो उसका जो मैनेजरियल स्किल्स है वो डेवलप हो जाती है. नेक्स्ट इज सूटेबिलिटी. It is more suitable when only one main product is sold. It is more suitable when number of main product is sold. So functional structure is suitable when we deal with one product or a little products, but the divisional structure is suitable where we deal with various types of product. Okay students, so these are the basic difference. In the next class we will study about the formal and informal organization. So thank you class.